Hi, Lalita. Good morning. Morning, sir. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm also good, sir. I saw your question, but didn't evaluate your question. Yeah, this time, how written good. It's a really good one. I liked it. Sorry, sir. कल जो आपने आंसर भेजा था, Sir, yes, sir. it was written good. आपने अच्छा लिखा है. Okay. हाँ, Okay, some of the answers is really, extraordinary. Thank you so Yes, much, it's a sir. good one. Yeah, it's a good one. Right. सर एक दो में पता है मुझे. कल मैंने 3 टेस्ट दिए सर अच्छा, good. और आज मेरी एल्बो इज पेनिंग लाइक हेल Oh, yes. तो बट आई एम लाइकिंग दिस पेन सर Yeah, और आज exactly. तो उसकी वजह से तो अब और भी Yes, मोटिवेशन हो गया. yes. Cherish it, right. यस यस ये सर. जो पता नहीं जो लेबर मजदूर होता है ना, उसको पसीने चल रहे होते हैं, बट यस उसको गर्मी नहीं लगता. पता है, उस पसीने से उसको ना जॉय मिलता है. राइट. यस ठंडा ठंडा, राइट. तो उस पसीने की और उस पसीने से जो मिली ठंडी है ना, उसकी जो एक्सपीरियंस है, दैट्स इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हम बैठे हैं एसी में और अपने आप को ठंडा महसूस करवा रहे हैं. यस सर यस. सो ये है कि अगर पेन हो रहा है, इफ यू आर सफरिंग, दैट्स गुड, you take this suffering, right? Yes. And there is no gain without pain, right? So paining is good, right? Take pain as much as you can, as much as you can read. Yes, you sir. can write. Okay. हाँ. And अभी it सर will मैं पहले of course. बोलिए. पहले ना सर मैं जैसे कंटिन्यूसली 1 घंटा भी नहीं लिख पाती थी बट yesterday I wrote for 2 hours and 40 minutes. Very good. तो मतलब कल मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि हाँ मेरा टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है एंड आई हैव रियलाइज्ड आल्सो. बट सर एक मतलब इशू हुआ कि मैंने जितना टाइम अपने आप के लिए लिखा था कि ये 2 घंटे का पेपर है तो मैंने उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही कर दिया. कोई बात नहीं. अब अभी लीजिए, आप 2-3 घंटे आराम से लिखिए. 3 घंटे तो लिखिए, जब बैठिए लिखने के लिए, लिखने के पर्पज से 2-3 घंटे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. यस सर यस. अच्छा सर, वो जो सेकंड मेल मैंने की थी उसमें ना एक्चुअली हैवी फाइल की वजह से अटैच हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सेंड कर दिया. फिर मैंने सेकंड में तीनों आपके मेल देखे, दोनों अटैचमेंट देखा, सारे आंसर देखे, मैंने कमेंट नहीं किया अभी तक. ठीक है, I'll do that very soon. ओके सर. So ग्लोबलाइजेशन का भी रहता है 1-2 बट इस बार इस हफ्ते में सेकंड टेस्ट दूंगी ग्लोबलाइजेशन का और इस हफ्ते फिर जो नया टॉपिक है वो बैलेंस ऑफ पावर वाला है क्योंकि दिस इज रिसेंट ना तो इसलिए तो आई एम प्लानिंग इस बार ये दिस इंटरेस्ट सिक्योरिटी पावर बैलेंस ऑफ पावर डेट्रेंट मतलब जो अभी हमने किया है पिछले हफ्ते वही वाला. ठीक है. तो कल हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में डिबेटिंग IR थ्योरी, राइट. और क्या है कि थियरी जो है ना, आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो डिसिप्लिन है, एज ए डिसिप्लिन इज ए वेरी यंग सब्जेक्ट, राइट. बहुत ही यंग है एज ए सब्जेक्ट, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट IR इज मच यंगर देन. Yes. Right. Like management is very young discipline. तो IR में मैंने डिबेट पढ़ा कि IR थ्योरी कैसे क्या डेवलप हुआ है. और फिर मैंने लास्ट क्लास में लिबरलिज्म, जो लिबरल आइडियलिज्म है, बेसिकली इसको आइडियलिज्म बोलते हैं. आपके सिलेबस में आइडियलिज्म लिखा है, इसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं, इंटरवार लिबरल भी बोलते हैं, लिबरल्स या लिबरल आइडियलिज्म भी बोलते हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे डिक्टेट करना चाहिए और आपको लिखना चाहिए आज. यस सर. एक सेकंड सर, ये जो मतलब हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, ये सब. एग्जैक्टली. ठीक है. एग्जैक्टली हम लोग वही कर रहे हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, मैं पेपर निकाल. श्योर.
Yes, sir. लिखिए एक्सप्लेनिंग डिबेट ऑन थ्योरी ऑफ आईआर, ये टॉपिक दीजिए और फिर लिखिए। एक्सप्लेनिंग डिबेट ऑन थ्योरी ऑफ आईआर। Yes, sir. लिखिए द डिबेट रिगार्डिंग, लिखिए द डिबेट रिगार्डिंग आईआर Yes, sir. took place Yes, sir. first time Yes. in the interwar period 1999 to 9, ऐसे लिख लीजिए 1939। The debate regarding IR took place first time in between interwar period, right? Yeah. हाँ, देखिए the focus of debate was Yeah. why World War I occurred. Why World War I occurred. Yes, sir. क्वेश्चन मार्क लगा दिया, why World War I occurred. हाँ? Yeah. Can the global community Yes, sir. कैन मतलब कैन के बदले में कोड लिख दीजिएगा क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोड ग्लोबल कम्युनिटी अवॉइड war like this could global community avoid war like this, that means Yes, first sir. world war. There are two perspectives. कॉलम दे दीजिएगा Yes. और लिखिएगा पहला classical liberals और liberal idealist. Liberal idealist Yes. पहला लिखे classical liberals and liberal idealist. लिखिए they believe that war can be preventable. War can be avoided. War can be avoided. Second, classical or political realist. Second लिखिए political or classical
realism. इसको रियलिज्म भी बोलते हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं, क्लासिकल रियलिज्म भी बोलते हैं, राइट? पॉलिटिकल को क्लासिकल रियलिज्म, हाँ, क्लासिकल भी बोलते हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं। तो अगर कुछ आ जाए टर्म तो घबराने का नहीं है, वो रियलिज्म ही है। या हाँ, देखिए, they believe that war Yes. is inevitable. That means we cannot prevent war, right? War is होता रहेगा। आप युद्ध, हाँ, युद्ध को नहीं रोक सकते, युद्ध होगा, ठीक है? Yes, sir. तो दो पर्सपेक्टिव था अर्ली में। एक कहता था कि वार को हम रोक सकते हैं, राइट? और एक कह रहा है कि नो, वार इज नॉट प्रिवेंटेबल, वार इज नॉट प्रिवेंटेबल, वार इज नॉट अवॉइडेबल, वार इज इनएविटेबल, वार तो होगा ही, राइट? Yes. ओके, लिखिए, इसे लिखिए। The liberal idealist focused on how we can prevent war. Liberal idealist, इसमें लिखना है, इसी में आगे लिख दीजिए, एक और लाइन, एक ही लाइन लिखवाता हूँ, ये दो पर्सपेक्टिव है। हाँ, ये तो दो अलग अलग है। हाँ, इसी एक लाइन में लिख दीजिए, वो पहला पैरा है ये आपका, इसी लाइन में लिखिए। Yes, sir. Liberal idealist Yes, sir. focused on Yes, sir. how we can, or how global community can prevent a disastrous war like WW1, whereas realists Yes, sir. explains why war is inevitable. Why war is inevitable. How focused on how global community can avoid a disastrous war. War like WW1, like World War I, disastrous war like WW1, whereas realists explain, S लगा दीजिएगा, realists explain why war is inevitable. Why war is inevitable. लिख दिए पहला? समझ में आया? Yes, sir. कि पहला डिबेट कब शुरू हुआ, राइट? और दोनों का क्या स्टैंड पॉइंट था? कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ? हाँ, बेसिकली डिबेट ये शुरू हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ क्यों, राइट? और क्या फ्यूचर में भी ऐसे वार हो सकता है, राइट? अगर ये हो सकता है तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ये कंसर्न था आइडियलिस्ट लोगों का, राइट? क्लासिकल आइडियलिस्ट और आइडियलिस्ट। पॉलिटिकल रियलिस्ट कहते कि देखिए, war is inevitable. जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुआ, war में occur, you cannot prevent war, right? So political realist question answered, why war is inevitable, right? And
क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट वार। सो ये हाउ क्वेश्चन का आंसर देता है, हाउ वी द ग्लोबल कम्युनिटी कैन प्रिवेंट द वार, एंड ये वाई क्वेश्चन का आंसर देता है वाई यू कैन नॉट प्रिवेंट वार। आप बोलते हैं ना कि मैं कर लूंगा, आप बोलते आप नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, कैसे करूंगा ये बता रही हूँ। समझ रहे हैं आप? Yeah. Right? So this is the initial debate between these two group of intellectuals, intellectuals, diplomats, statesmen, or foreign affair specialists. Right? Yes. Clear? This is? Yes, sir. अब लिखिए लिबरल आइडियलिस्ट और लिबरल आइडियलिज्म इन आया। लिबरल आइडियलिज्म, जिसको हम आइडियलिज्म भी बोलते हैं, आइडियलिस्ट भी बोलते हैं। लिबरल आइडियलिज्म सिर्फ सिर्फ आइडियलिज्म बोले तो भी लिबरली या और भी होते हैं? नहीं, और कुछ नहीं होते हैं, अब और कुछ नहीं होता है। तो लिबरल बोले या लिबरल नहीं बोले तो भी? नहीं, लिबरल, हाँ, लिबरल ना बोले तो चलेगा, लेकिन आइडियलिज्म बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लिबरलिज्म का अलग से और शेरी है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए आइडियलिज्म सिंपल, या अगर लिख दे लिबरल आइडियलिज्म तो लिबरलिज्म एक्सप्लेन मत कीजिएगा, आइडियलिज्म ही होगा। ठीक है, होता क्वेश्चन क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है, आप जानते रहते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा वर्ड ना वो इधर से उधर कर देता है। एग्जैक्टली, दे प्ले विद द वर्ड। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द वर्ड, जो वर्ड है क्या, इसके अराउंड इर्द गिर्द में क्या वर्ड लोग पूछ सकता है। राइट, हो सकता है सिंपल पूछ ले, हो सकता है वर्ड लिबरल आइडियलिज्म पूछ ले, कोई बात नहीं, आपको लिखना वही है। राइट, आपको मैंने बताया कि इसको ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियलिज्म, इसको बोलते हैं लिबरल आइडियलिज्म, और इसको बोलते हैं इंटरवार्ड लिबरलिज्म। क्या बोलते हैं? इंटरवार्ड लिबरलिज्म। इंटरवार्ड लिबरलिज्म, या इसको बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। क्या बोलते हैं? क्लासिकल लिबरल आइडियलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, या इन आईआर। मैं भी लिख, एक सेकंड सर। हाँ, ये लिख लीजिए, इतने सारे नाम हैं, देखिए है ना, आपके मोहल्ला में आपको शायद ललिता नाम से ना जानता हो और किसी और नाम से जानता हो, और मैं आपको ललिता ललिता ढूंढते रह जाऊंगा और ना मुझे कोई बता पाएगा, ना मैं आपको ढूंढ पाऊंगा। और एग्जाम में ऐसा होता है, राइट? Sometimes you know the fact, you know the concept, but you don't know the name of the particular concept. कि इसको ऐसे भी बोलते हैं, right? So you note it down. Done? Yeah. अब लिखिए, the Woodrow Wilson was pioneer of liberal idealism, yes sir. Right? It was the first debate
in international theory. It was the first debate in international theory, IR theory. Yes, sir. Woodrow Wilson, Woodrow Wilson, a noted scholar and a statesman, Woodrow Wilson, a noted scholar and a statesman, was critical of balance of power, and secret diplomacy. Yes, sir. For him, BUP caused Yes. WW1 and failed to establish peace, security, and stability in the international system. Yes, sir. He proposed 14-point program. He proposed the 40-point program. 14. 14-point program. 14. Yes. 14-point program that led to creation of League of Nations. Yes, sir. According to Woodrow Wilson, Yes. the collective security, and you Yes. know collective security, right? I don't need to define. Collective Yes, security Yes. collective security, international organization, Yes, sir. international organization, and international law.
Yeah. can prevent war, and it could establish peace, security, and stability in the international system. International system. Yes, sir. Right. So collective security, international organization, and international law, right, can prevent Yes. war, and it could establish peace, security, and stability in the international system, right? Yes, sir. Wilson thought was influenced by great philosopher. Okay, Wilson thought was influenced by great philosopher Yes, sir. Wilson thought was influenced by great philosopher like Montesquieu and Immanuel Kant. Montesquieu and Immanuel Kant. Yes, sir. लिख लिया? Yes. आगे लिखिए. According to Montesquieu, अब यहाँ से पैरा चेंज करना था. यहाँ जो मैंने लिखा है ना, इससे पैरा चेंज करना है यहीं से. Yes. विल्सन थॉट वाज, पैरा चेंज कर लीजिएगा. ऊपर तो हमने एक बात कह दी कि भैया हमें पीस को प्रिवेंट रखना है. हमें पीस रखना है क्योंकि बीओपी खत्म हो गया है. बीओपी सेक्रेट डिप्लोमेसी और बीओपी से वार होता है और पीस एस्टैब्लिश नहीं होता है. तो पीस कैसे एस्टैब्लिश होगा? कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ. इसके कारण हम एक वार को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और जो दुनिया में है हम क्या कर सकते हैं, पीस स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो अब पैरा चेंज करके क्या लिखा आपने? Wilson thought was influenced by great philosophers like Montesquieu and Immanuel Kant. According to Montesquieu, according to Montesquieu, human nature play an important role in decision making. Human nature play a very important role in decision making. Yes, sir. And human nature is not so defective. Human nature is not so defective. Yes, sir. Or prone to self-interest. Prone to self-interest. Yes, sir. That much prone to self-interest, that much Yes, sir. Which could lead to war. Full stop. Yes, sir. War is a result of, war is the result of societal attributes and competition among nations.
What are the result of societal attributes? और क्या लिखा? Competition among nations. Yes, among nations, right? Therefore, war is not inherent part of humanity. War is not inherent part of humanity. yes, sir. Yeah, full stop. Now, look here. According to Kant, Immanuel Kant, according Yes, to Immanuel Kant, nation state yes, sir. can easily Yes, sir. overcome the anarchical structure of international society. The anarchical structure of international society. Yes, sir. Full stop. For Kant, comma, for Kant, Yes, sir. nation state must engage Yes, sir. to form Yes, sir. international organization nation state must engage to form international organization, and they Yes. engage in collective security to protect interest of one as well as interest of all. Nation state must engage to form international organization, and they engage in collective security to protect Yes, sir. क्या लिखा? Security protect क्या लिखा? Security, collective security to protect interest of one as well as interest of all. Right, full stop. अब पैरा चेंज कर लीजिए. Yes, sir. पैरा चेंज कर लिखिए. The idealism or interwar period of classical liberalism Yes, sir. promoted by Woodrow Wilson Yes, sir.
was based on the above two philosophers, was based on the idea of above two philosophers. Yes, sir. The basic idea of idealism, the basic points, actually, the basic points of idealism are following. Yeah. पहला लिखिए, war and conflict are outcome of irrational decision making. War and conflict are outcome of irrational decision making. Yeah. This दूसरा लिखिए, this type of activities are result of poor leadership but not of mass public opinion. Yes, sir. Third लिखिए, misunderstanding among leaders and diplomats are the primary cause of war. Primary cause of war. Misunderstanding among leaders and diplomats are primary cause of war. Yes, sir. Comma, not of human nature or anarchical structure of international system. Yes, sir. Fourth लिखिए, international organization and international legal system can help That help. International organization and international legal system can help. Yes, sir. In rectifying misunderstanding. Yes, sir. And in establishment of peace, stability, and security. Right? Yes, sir. Achha, देखिए, the idealist perspective, idealism of IR, हाँ वो पॉइंट खत्म हो गया. Idealism of IR advocates Yes, sir. for following arrangement. पहला देखिए again अब. Yes, sir. Growth of international organization.
like League of Nations, League of Nations. दूसरा international legal principle, international legal principles. Yes, sir. Third, promotion of democracy. Promotion of democracy. Yes, sir. फोर्थ लिखिए cooperation among nation state for collective security. Yes, sir. फिफ्थ लिखिए national self determination. Yes, sir. To promote freedom. Yes, sir. Yeah, so these were the major arrangement. Yeah, how we can prevent war, right, and establish peace, security, and stability in international system, right? Right. Got the idea? Yes. Yeah. लिखिए एक लाइन एक दो लाइन और लिख लीजिए, उसको कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग. लिखिए. ये पॉइंट्स में नहीं, पॉइंट्स तो लिख ही लीजिए ना, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं. हाँ, पॉइंट्स में नहीं, ओके, इसको हाँ कंक्लूडरी रिमार्क टाइप का एक दो लाइन लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ. यस सर. Idealism in IR, yeah, as a theory, yes sir. thinks that the above arrangement जो आपने ऊपर लिखा है, right, the above arrangements, yes sir, serves yes sir, important measures and mechanisms yes sir, to prevent war, yes, and establish peace, cooperation, coordination, सब कमा लगे, security and stability in international politics. cooperation, coordination, Peace, security, and stability in international relations. In international relations, yeah, international politics. Yes. समझ में आया? Yes sir. हाँ, लेकिन क्रिटिसिज्म, अब इसका क्रिटिसिज्म लिख लीजिए. Yeah. Idealism
was criticized as a utopian theory of IR. Was great. Idealism was criticized as a utopian theory of IR. Utopian. हाँ, यूटोपियन मतलब एक होता है ना कि हम यूटोपियन लव, यू नो, No. यूटोपियन मतलब ये होता है आदर्शवादी, अच्छा. हिंदी में बोलते हैं आदर्शवादी. इवन आइडियलिज्म को भी हम आदर्शवादी बोलते हैं. यूटोपियन मतलब ऐसा सोचना कि प्रैक्टिस से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना है ना. हाँ, जैसे कभी लोगों की कल्पना होती है, हाँ, चलो हम आसमान में घूम के आए, हाँ, होता है ना उनका. कवि की जो कल्पना होती है, it's completely, you know, it's some utopia, right? So Okay. हाँ, Utopian theory of IR. Okay. The League of Nations, Yes, sir. helped to prevent WW2. The League of Nations failed to prevent WW2. WW2 मतलब World War II, right? Yeah. Prevent WW2. The founder member, Yes, sir. comma, the US did not join the League of Nations. League of Nations. Right? Yes, sir. In practice, nation state was engaged in balance of power and secret diplomacy And secret diplomacy during yes. interwar period. 1919 और 1939 ऐसे लीजिएगा. Yeah. देखिए E.H. Carr Yes, sir. in his book Yes, sir. the 20 years crisis, Yes, sir. 90 ऐसे लिख दीजिएगा, 20 years crisis colon और फिर ये ऐसे लिखिएगा 1919-1939. इतना बड़ा किताब बना. Has criticized the Wilsonian notion of international politics. Wilsonian notion of international politics. Done. According to E.H. Carr, बस एक line. According to E.H. Carr, Yes. idealism lacks empirical validity. Idealism lacks empirical validity.
Yes. And thus, and comma, thus, फिर comma, a utopian theory of IR. Yeah. हम अपने दोस्तों में कहते हैं ना कि अरे तुम आदर्शवादी बहुत बन रहे हो भैया, आदर्शवादी मत बनो, हाँ है ना, तुम्हारे जैसा सब लोग नहीं है, हाँ, लोग की जो लोग है वो अलग अलग है। तो ये जो क्रिटिसाइज्ड होता है बहुत, ईएचकार बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं विल्सन का। ईएचकार बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, उनकी एक किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस बुक 20 years crisis, बहुत पॉपुलर किताब है ये 20 years crisis। और उसके बाद एक किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। यू डोंट नीड टू, बस सुन लीजिए, हाँ हाँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो ये हम आइडियलिज्म खत्म करेंगे। हमारा आइडियलिज्म जो थियरी है ऑफ आईआर वो खत्म हो गया। राइट, ये रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, ये अभी चलते, अभी चलते, सब करेंगे। आइडियलिज्म खत्म हो गया, मैंने कहा, मैंने ये ना कहा कि थ्योरी खत्म हो गया टोटल, नहीं। लिखिए रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। Realism and neorealism. कॉलम देकर लिखिएगा पावर बेस्ड थ्योरी, पावर बेस्ड थ्योरी ऑफ आईआर, realism and neorealism, power based theory of IR. Yeah, अब लिखिए realism as a perspective on international politics or perspective on IR, simple लिख दीजिए। Realism as a perspective on IR is grounded, yes sir, is grounded in, yes sir, some of the grounded in some of the great political thinkers, some of the great political thinkers of the Western world, yes sir, comma, including, yes, including Thucydides, comma, Machiavelli, yes, comma, and Thomas Hobbes. yes sir, In the 20th century, comma, Hans Morgenthau, लिखा, yes sir, कॉमा EH कार में CARR, हाँ, CAR मत लिखिएगा मेरी तरह, राइट, वो कार वैकिल होता है, हाँ, yes sir, हाँ, तो CARR लिखिएगा। मैंने CAR लिख दिया था लिखते वक्त, तो एक जगह डबल आर लिख दिया, एक जगह, ऐसे ही होता है जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग एरर होता है।
Hans Morgenthau, E.H. Carr, comma, Kenneth Walsh, Yes, sir. Thomas Selling, Yeah. John Mearsheimer, Yes, sir. फरीद जकारिया. अब फरीद जकारिया का नाम सुना आपने? कभी सुना होगा शायद. जॉन मीरशैमर का तो आपको पहले हम लोग बात कर चुके हैं. मॉर्गेनथॉ और जीन मॉर्शमर का हम लोग बात कर चुके हैं. जकारिया के बीच में आप CNN न्यूज नहीं देखती हैं? CNN नहीं. जकारिया CNN पे आके न्यूज बोलते हैं. जकारिया इज अ जर्नलिस्ट लाइक रविश कुमार. एक घंटे जैसे न्यूज. आप यू आर जर्नलिस्ट ना? टाइम. हाँ. सो आप जैसे रविश कुमार आके प्राइम टाइम डाल देते हैं, वैसे फरीद जकारिया आकर के न्यूज, ही इज अ न्यूज एंकर, ही इज अ जर्नलिस्ट बेसिकली, राइट, एंड ही इज वेल नाउन, राइट. उनके ऊपर कुछ प्लेगरिज्म का भी कुछ ये लगा था कि ही किस चीज का? प्लेगरिज्म का. प्लेगरिज्म, राइट, यू नो प्लेगरिज्म. यस. कॉपी कर लेना नेट से. या एग्जैक्टली, कहीं से भी कॉपी कर लेना, वो प्लेगरिज्म, चोरी, सिंपल चोरी. नेट वाली चोरी. हाँ, वो कहीं से भी चोरी करना एकेडमिक में उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म. एनीवे, हाँ, क्या लिखा? इन 20th century, in the 20th century, Hans Morgenthau, E.H. Carr, Kenneth Walsh, Thomas Selling, John Mearsheimer, Farid Zakaria are important scholars Yeah. on power-based theory of IAS. Power-based theory of IAS. Yes, sir. मैं चेंज के लिखेगा एक लाइन बस. In India, yes, sir. Such thought can be traced to Kautilya's Arthashastra. Such thought can be traced to Kautilya's Arthashastra. Such thought can be traced to Kautilya's Arthashastra. Full stop. Yes, sir. His concept of Mandal theory, explains power politics. Yes, sir. Realists explains why war is inevitable. Realists explain Yes, sir. why war is inevitable. Realists explain Yes, sir. why war is inevitable, right? Yes. Inevitable, right? चलिए लिखिए. They argued that
Yes, sir. It is very easy to understand. It is very easy to understand. Yes, sir. By understanding, Yes, sir. by understanding why people want power, why people want power, Yes, sir. who has power, and how power is distributed. Yes, sir. Right. There are 4 versions of realism. बहुत बड़ी थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. Okay. Oh. There are 4 4 versions of realism. Yeah. है ना. 4 वर्जन है रियलिज्म का. हाँ, लेकिन Yes, पहला को बोलते हैं रियलिज्म. लिख लीजिए, रियलिज्म / क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल और और पॉलिटिकल रियलिज्म. yeah. इसके आगे में नाम लिखेगा मॉर्गेनथाउ, HANS, हैंस मॉर्गेनथाउ. इसी क्या? हाँ, EH का हैश डाल के, हैंस मॉर्गेनथाउ, EH का. दूसरा वर्जन जो है वो लिखेगा Yes, sir. न्यू रियलिज्म और क्लासिक स्ट्रक्चरल रियलिज्म. स्ट्रक्चरल रियलिज्म हैश डालिएगा. हैश से डैश बोलते हैं. हैश क्या बोलते हैं इसको? डैश. Yes. वो hash वो. This is dash और dot is colon. राइट. डैश डालिएगा. और हाइफन भी बोलते हैं ना. हाइफन एक्चुअली दो न्यू रियलिज्म के बीच का है ना. जैसे वर्ड के बीच में डालेंगे तो हाइफन. या चलिए, न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म. सो न्यू रियलिज्म के बीच में हाइफन डालिएगा. न्यू एंड रियलिज्म, राइट. यस सर. और स्ट्रक्चरल रियलिज्म डैश डालिए और लिखिए, नाम लिखिए केनेथ वाल्ज. केनेथ वाल्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए. केनेथ वाल्ज, जॉन मिर्सैमर. या यस सर. थर्ड लिखिए न्यू क्लासिकल रियलिज्म. न्यू क्लासिकल रियलिज्म. या न्यू क्लासिकल, इसमें कोई हाइफन नहीं दीजिएगा. न्यू क्लासिकल रियलिज्म, यानी कि जो क्लासिकल रियलिज्म है उसको ही अपडेट किया है इन लोगों ने. हाँ, ओके. तो हाइफन या कॉलन जो भी डालना है, ये डैश या कॉलन जो भी डालना है लिखिए. फरीद जकारिया, रैंडॉल स्वेलर, ये दोनों लोग न्यू क्लासिकल लिबरल्स हैं, रियलिस्ट्स हैं. और चौथा है यस सर. फोर्थ है थर्ड वर्ल्ड डैश सबल्टर्न रियलिज्म.
थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म या सबल्टर्न रियलिज्म, जो भी कुछ कह लीजिए, थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म और सबल्टर्न रियलिज्म, कॉलन मोहम्मद अयूब डैश अमिताभ आचार्य। थर्ड वर्ल्ड से मुझे वो फोर्थ वर्ल्ड एक बार समझना था, बाकी हम एंड में 10 मिनट्स पहले वो समझ सकते हैं। मतलब वैसे मुझे वो समझ में आ गया सर, लेकिन 2-3 लाइन मुझे मतलब वर्ड लाइन टू लाइन समझनी थी। ओके इन जनरल आई गॉट द कॉन्सेप्ट, बट वो जो एक 3-4 लाइनें हैं जो मुझे नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, ठीक, जरूर 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 जरूर। अभी 10 मिनट पहले, मतलब एंड होने से पहले विल डू दैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विल डू दैट, विल डू। डन सर। Done. So there are 4 versions of realism, right? But हमें जो पढ़ना है, हमें तो बस पहला वाला पढ़ना है, but हम 2 पढ़ेंगे, right? We should be prepared. We should be prepared with all, right? और थोड़ा मैं ये थोड़ा लिखवा दूंगा, 100 वर्ड, 200 वर्ड, ज्यादा नहीं। न्यू क्लासिकल रियलिज्म क्या है, फरीद जकरिया के, हाँ मैं बता दूंगा उस बात। एंड सबल्टर्न क्या कहता है, अमिताभ आचार्य क्या कहता है, so that you know all the concept. Can I come in 1 minute? Yeah, sure. Go ahead. Yeah. Yeah. I'm back. Yeah. So लिखिए क्लासिकल
/ political realism, what it is all about. पहला ना, हाँ पहला लिखिए, classical / political realism या simple realism, कुछ भी. yes sir. हाँ लिखिए, the classical realist, Yes sir. thinks that Yes sir. the first and foremost phenomena of politics is power. Whether it is domestic or international. Yes sir. All nation state, full stop डालिएगा, फिर लिखिए all nation state seeks power. All nation state seeks power, comma, thus, again comma, Yes sir. their interest lies in accumulation of power. Yes sir. Why accumulate power? लिखिए, why accumulate power? Power, comma, questions. Yes sir. To guarantee security. To guarantee security. Yes sir. Security. Without power, full stop. Without power, Yes sir. state is vulnerable. State is vulnerable. Vulnerable. Yeah. Vulnerable. देखिए, and their survival Yes sir. always is in question. Survival is always in question. Is always in question. Yes sir. For instance, Tibet was unable to survive and protect security. Protect security due to absence of power. So with security, protect security, yeah. For example, you know, Tibet क्यों गुलाम हो गया, right? Because Tibet has no power, right? And Tibet was unable to survive. Yes. And protect security due to absence of power. Right? मैंने एग्जांपल दे दिया अभी यहाँ पर समझाने के लिए. Okay. Any nation state, power is very important, and that is in practice, right? Done. लिख लिया? देखिए Hans Morgenthau Yes. in his book
Hans Morgenthau in his book Yes, sir. Politics Among Politics Among Nation, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने इन्वर्टेड कॉमा से, कोई भी किताब का नाम लिखेगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा। हाँ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये बुक का नाम है ये भी। हाँ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, स्पेशली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमंग नेशंस है या नेशंस होगा, यस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, yes sir. Politics among nations, colon, the struggle for power and peace. Yeah. Argued that Yeah. international politics comma, Yes, sir. comma, like all politics, comma, yes sir. is a struggle for power. Yes sir. Yes sir. लिख लिया? So, you know, पहला point है, this is the first point to be noted. We have already noted that, you know, power is very important in politics, right? Power is like currency of politics, right? If you don't have currency, you can't buy in the market, right? You have no existence in the market. Similarly, you know, in politics, if you don't have power, your survivability in question, your security in question, right? Yes, you can be humiliated, right? You can be annexed, right? And your rights can be encroached upon by the other nation state, right? Yes sir. And this is the practice what's going on. It happens everywhere. If you go to market, you know, if you don't have money, no person will ask you, right? Even not your friends, not your relatives, not your even no one will become your relative. Even relatives will hide themselves from you, right? Yes sir. It is similar in international politics, right? Don't mind, I'm saying you, then you means, you know, anyone, right? For me, yes sir. Yeah. this is the style मुझे दिमाग में आ जाता कि मतलब, you know, project, right? You know, No, so sir, I just take it like explanation, right? So money is, you know, like currency is very important in politics as a market. Similarly, power is very important in politics. Right? Politics, right? Even it may be domestic politics, it may be your politics within the family, or it might be, you know, international politics. Power is very, very important, right? So politics is nothing but a struggle for power, right? So for example, I'm giving you example कि हम family में होते हैं और हम दो भाई बहन रहते हैं और मम्मी क्या कहती है, पोछा लगाओ अपनी बेटी को, और बेटी कहती है कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, ये जो हमारा भाई है ना ये भी पोछा लगाएगा, right? Yes. And you know, this is the conversation, right, of एक घर की बात है. This is politics. Power is asserted by the girl, yes, कि मैं नहीं लगाऊंगी, ये लड़का भी हमारे साथ लगाएगा, right? Yes sir. Even between wife and husband, right? The wife insists, right, कि चलो तुम भी बर्तन धो, या तुम भी खाना बना लो, या तुम भी घर का झाड़ू मार दो, मैं पोछा मार दूंगी, right?
Yes. right? And man always insists कि नहीं कर लो यार, मेरे से नहीं होगा, हाँ मुझसे नहीं होता है, हाँ या मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मेरे, this is politics, right? And it is a struggle for power, right? Yeah. Right. मैम भी कहती है सर आपको। जी क्या 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 क्या? मैम कहती है आपको, आपको कहती है मैम। It happens everywhere. Yes, it happens everywhere, right? So how we can, ignore politics even within a family? No, it happens, isn't it? Yes, sir. Right. So international politics, whether it is domestic, it is politics within the family, it is a struggle for power, right? Yes, so sir. first assumption is power is very important, right? First and foremost important phenomena of politics is power, right? Power, yes, yeah. Yes, power. So nation state seeks power, right? And they accumulate power. Why do they accumulate power? Because they wish security, right? They wish survival in international society, right? Yes. Without security and survivability is in question, right? So hence Morgenthau argued that power politics is nothing but a struggle for power, right? Yes, sir. The second assumption, of realist is, Yeah. the second assumption of realism is Yes. assumption. Nation state is a primary actor in IR. Nation state is primary actor in IR. Yes, sir. It means Yes, sir. nation state holds sovereignty. Holds sovereignty. Nation state holds sovereignty. Yeah. And prime decision making authority. In world politics. Yeah. Right? Yes, sir. Third assumption लिखिए. Second assumption, third assumption लिखिए. Yes, sir. Realism believes that Yes, sir. International system or international structure, international system ऐसे लिखिए, international system. Yes, sir. क्या लिखा आपने? Third point. Realism believes that international system is anarchic. Yeah. In domestic politics, comma, there is a hierarchy. In domestic politics, there is a hierarchy, but
in international politics, Yes, sir. there is anarchy. There is anarchy. Yeah. That is no world government. To control behavior of nation state. Right? Yes, sir. Yeah. The fourth assumption of realism is about human nature. Yes, sir. About human nature, right? Yes, sir. They emphasize on Yes, sir. on Hobbes, Yes, sir. Hobbesian human nature, Hobbesian. or Hobbes human nature, Hobbesian concept of human nature, Hobbesian conception or concept of human nature, Hobbesian concept of human nature. Yeah. Human nature. Yeah. Right? According to Hobbes, Yes, sir. man desires for power. Man desires for power. Yeah. Right? They are competitive. They are competitive, Yes, sir. diffident, and want glory. Human desires for power. They are competitive, diffident, and want glory. Done, sir. Then, Yeah. in Diffident such, means? diffident means, not to be defeated, right? Competitive means diffident means, not be, not to be defeated, not to be, uh, um, muted by someone else, right? मतलब कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता. कोई defeat नहीं कर सकता, right? And they want glory, right? In such situation, right? Man is at war against age. And Yes, sir. against age and all, due to lack of central authority.
मतलब एनार्की है इसीलिए कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लैक करता है। तभी तो एनार्की है। इन सच सिचुएशन मैन इज एट वॉर, राइट? Man is at war against each and all, against all, due to lack of central authority. Disorder and anarchy prevails everywhere. Disorder and insecurity, ऐसे लिखिए, insecurity. Anarchy लिखिए, disorder and insecurity. Anarchy नहीं लिखना, नहीं anarchy मत लिखिए, anarchy already word हमने पहले यूज कर लिया है ना. Disorder and insecurity, you know, the playing with word is always, you know, you learn gradually, you learn, right? yes, कि कैसे वर्ड एक जगह से दूसरे वर्ड को, तीसरे वर्ड को, चौथे वर्ड को प्लेस कर सकते हैं. हाँ देखिए, क्या लिखा आपने? disorder and insecurity prevails. Disorder and insecurity prevails everywhere. Yeah. In which man wants to dominate man. In which man wants to dominate man. लिख लिया? Yes, yeah. Similarly, comma. Similarly, yes, sir. In the international politics, in IR, simple लिख दीजिए. Similarly, in IR or international politics ज्यादा word कहीं कहीं suitable होता है. International politics. Similarly, in IR. In IR, nation state wants power. Wants for power or desires for power. Yeah. They wants to dominate other nations. They want to dominate other nations. Yeah. Please stop it. In the lack of international authority, or due to lack of international authority, comma, yes, sir. Nation state yes, are competitive and comma, diffident, yes, sir. And they want glory. Yeah. They all yes, are at war. Yeah. Against each and all. Yeah. Disorder and insecurity prevails in the international system. Yes. Only power ensures safety. Only power ensures safety. Yeah. Therefore, nation state wants power.
how psychological analysis, right? Of, isn't it? Yes. अच्छा, कौन सा assumption था? ये चौथा assumption था ना? Fourth assumption, human nature. Yes. And आपने analogy देखी कि कैसा human nature society में जो है, वही जो एक psychological aspect होता है, वो international system में भी होता है, right? Yeah. Right? Yes. फिफ्थ पॉइंट लिखिए. Yes. देखिए, Fifth assumption. realist, हाँ, fifth assumption. Realist, like Machiavelli, realists like Machiavelli, Yeah. argues for dual morality. Argues for dual morality. Yes. For nation state, Yes. power maximization Yeah. comma preservation of power, Yes, sir. and security Yes, sir. are moral duty. Yes, sir. Right? Yeah. So statesman, therefore statesman, or it is a moral duty of a statesman Yes, to sir. follow pragmatism, Yes, sir. and avoid common morality. Yeah. एक और लाइन, it is a reason that Sorry, sir. it is a reason that यहाँ पे Yes, sir. ये देखिए reason that लिखा हुआ, it is a reason that the first law of statesman, right? First law of motion क्या है? न्यूटन का, right? Have you heard of F बराबर ma? The force is directly proportional to acceleration. Yes. That is Newton's first law. But here the first law of statesman, it is necessary reason that to protect and secure the sovereignty and integrity of a nation. Right? So these are the 5 pure assumption, basic assumption. ये reason attack का मतलब ये first law ऐसा? The first law for the statesman.
तो ये कोई मतलब और लैंग्वेज का टर्म है ये, रेज़न डिटैच? रेज़न डिटैच डिप्लोमेसी में ही यूज करते हैं, राइट? दिस बेसिकली लैटिन वर्ड है। तो जैसे स्टेटस को यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे स्टेट हाँ फर्स्ट लॉ। हाँ, it is a first law of international politics, a statesman of international politics for nation state to protect and secure the sovereignty and integrity of a nation. Done, sir. Done? Yeah. So you got the idea how, you know, how Tibet really, I don't know what the Tibet का जो leader थे वो कर क्या रहे थे 1949 में, right? हाँ, yes. While I was, you know, writing this PPT, I was thinking what Tibetan leaders were doing, right? So morality for common people is different, rather than, you know, and morality for our leaders, morality for a statesman is totally different, right? So if you know, give up the military, you know, this practical morality or this pragmatic morality, right, or the morality what Machiavelli says, you know, the reason detached, Yeah. right? If your idealism ज़्यादा चलेगा नहीं, right? Yes, sir. है ना? चलिए, तो ये हमने, हाँ, आइडियलिज्म में तो वो मतलब ओवर आइडियलिस्टिक किताबों वाली बातें कर रहे थे, वो तो प्रैक्टिकली तो उतना। हाँ, और you know, the when there was a debate between the idealism and realism, realists won the battle, right? Because they were talking about the practice, right? So in debate, yes, but there is a further debate. We'll go on. So this is a book, Hans Morgenthau, Politics Among Nations, The Struggle for Peace and Power, The Struggle for Power and Peace. This book was written in 1948. Now come to the Hans Morgenthau's argument. देखिए, Hans Morgenthau argument. Hans Morgenthau argument. Yeah. So you got the idea? क्या realism का क्या basic assumption है? क्या मानते हैं वो basic? हाँ? Yeah. लिखिए, Hans Morgenthau. Hans Morgenthau. Yeah. Is the father of modern realism. Is the father. Is the father of modern realism. Yeah. In his full stop. In his book, comma, Politics Among Nations, The Struggle for Peace and Power. यहाँ पर भी मैंने स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस लिखेगा, उल्टा लिख दिया मैंने. Politics among nations, the struggle for power and peace. The struggle for power and peace. तो पावर पहला है, हाँ, क्योंकि ये लोग पावर ग्रीडी लोग, हाँ, पावर के ऊपर ज्यादा फोकस है, पीस के ऊपर कम है ना. उनको लगता है कि वार तो होना ही है, तो you know, accumulation of power is a primary goal, right? Yes, sir. So in his book, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, originally published in 1948, international relation, I'm telling you, international relation में this book is Bible, right? बहुत पढ़ा गया है. Originally published in 1948, like a theory of justice में Rawls,
20वीं सेंचुरी में रॉल्स को अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो जस्टिस नहीं पढ़ा, है ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर किसी ने इस किताब को नहीं पढ़ा तो उसने IR नहीं पढ़ा। Okay. वो बात हो जाती है। यस, इन हिज बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पेस, originally published 1948, Morgenthau laid out the basic principle of realism. Laid out the basic principles of realism. Right? Yes, sir. Okay. The Morgenthau views on view is based on the Hobbes human nature. Yes, sir. Human nature, capital small में ही लिखेगा, human nature and Machiavellian concept of Machiavellian notion of power. Yeah. Morgenthau's view is based on Hobbesian human nature and Machiavellian view of power, right? Yeah. He proposed 6 elements of realism or 6 principles of realism. He proposed 6 principles of realism. Yes, sir. He proposed 6 principles of realism. Which are following. Yes, sir. 6 प्रिंसिपल उन्होंने दिया। लिखिए पहला प्रिंसिपल लिखिए। Yeah. लिखिए, like all politics in general, comma, like all politics in general, Yes. international politics is reflection of human nature. Yes. Now you remember, जो आइडियलिस्ट थे वो कह रहे थे कि ह्यूमन नेचर के कारण ये वार नहीं होता है, हाँ, है ना? Yes. ये कह रहे कि नहीं, ह्यूमन नेचर ही ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर के अंदर है, राइट? उसके अंदर इतना बैलेंस है ह्यूमन के अंदर कि वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी में भी, हर जगह, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, राइट? Yes, sir. So like all politics in general, international politics is a reflection of human nature, right? Yes, sir. Like man seeks power, comma, nation state seeks power, right? Clear? Yeah. सेकेंड पॉइंट लिखिए, हमें 6 पॉइंट लिखना है, इनकी 6 प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay.
सिक्स प्रिंसिपल। हाँ, सेकेंड लिखिए, तो नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड, सेकेंड लिखिए, नेशनल इंटरेस्ट defined, national interest defined और यहाँ पे थोड़ा वर्ब यूज करते हैं, must be defined, national interest must be defined in terms of power, in terms of power, कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट होगा वो हमें पावर के इर्द गिर्द में ही है ना? यस सर। हाँ, कि हमें पावर किस तरह से आगे बढ़ना है ना? अल्टीमेटम तो यही है, पावर। हाँ, पावर, राइट, एंड दैट पावर इज मल्टी डायमेंशनल। जिस दिन हम पढ़ रहे थे नेशनल पावर, यू नो, कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, हाँ, कुछ भी कह के पावर, पावर बढ़ाना है। थर्ड लिखिए, लिखिए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, the basic objective of foreign policy is to accumulate power, right? No amount of power is enough. No amount of power is enough. yes sir, right? And power is an and itself. Done? Third point? yes sir. So foreign policy में हर स्टेट्समेंट का ये है कि कैसे accumulate होगा पावर, राइट? तो 3 हो गया ना? yes. चौथा देखिए, there is no role of value, morality, yeah, there is no role of value or moral value लिख लीजिए, moral value or ideology in politics. yeah, There is no role of moral value and ideology in politics. It is an autonomous domain. It is an autonomous domain to maximize power. पावर की बात कर रहे हैं ना, पावर का भूखा इंसान नहीं होता है। कितनी बार लिख दिया होगा हमने वर्ड पावर, राइट। सी बट अलग अलग बात करें कि आइडियोलॉजी में अगर बोल रहे तो वहां पर भी आइडियोलॉजी नहीं करना है, हाँ, राइट। फिफ्थ लिखिए, तभी पावर बेस्ड थ्योरी, नाम ही इसका है पावर बेस्ड थ्योरी। फोर्थ ना फिफ्थ लिखिए, there is no international morality, international
moral principle. Abolition morality. There is no international moral principle in international politics or in IR SSC politics. Yeah. There is no international moral principle in IR. Right? We must think what is the right thing to do. We must think what is the right thing to do. Rather than yes, sir. What should be right thing to do. Rather than what should be. Right thing to do. Yes. यहाँ पे is है, यहाँ पर should है, यहाँ पे ought भी लिख सकते हैं. What ought to be right thing to do, या what should be. Right. So we must think what is the right thing to do. Right. अगर मान लीजिए पूरा अनार्की है सोसाइटी में, सब लोगों ने हथियार लेके रखा हुआ है, right? It would be, you know, very dangerous not to keep arms. है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, so अगर मान लीजिए कि आपके चारों बगल में लोग, किसी ने बंदूक, किसी ने तलवार, किसी ने कुछ लेके रखा है, you have to also think about, right? Yes. आपको, how do you provide your security, right? Yes, sir. And there is no general moral principle who will behave what, right? So because human nature is very dynamic, right? So every human behave will differently. Yes. Yeah, six principle. छठा principle. मजा आया ना ये पढ़ के? अच्छा लगा ना? थ्योरी? Yes, sir. Yes. हाँ, बहुत बढ़िया थ्योरी. नहीं, आज पूरा टॉपिक ही मतलब अच्छा है. हाँ, कि जिंदगी में ऐसा ही प्रिंसिपल होना चाहिए. हाँ. है ना? अच्छा, 6th लिखिए. Yes, sir. Like Machiavelli, comma, Morgenthau, argue for dual morality. Yes, sir. That is morality for a nation state, Morality for a nation state is different from general morality. Like Machiavelli, Morgenthau argue for dual morality. That is, morality for a nation state is different from general morality. Done. Survival and security. Survival and security is or our primary goal. In IR.
Morgenthau does not believe in international organization and collective security. Morgenthau has no faith or has little faith, ऐसे मतलब has little faith. No, बड़ा ही harsh word हो जाता, judgmental. Morgenthau has little faith. कौन सा वर्ड हार्श हो जाता है? नॉट बिलीव. नहीं, कोई जजमेंटल अगर सेंटेंस बोलते हैं ना तो वो थोड़ा हार्श हो जाता है. हाँ, ऐसे लिखिए, Morgenthau has little belief Yes, sir. on international organization Yes, sir. security. कैसे? Done. Yeah. अच्छा, लिखिए 3S for IR और realism 3S. Realism 3S. Realism 3S. Yeah. Statism, survival and self-help. Statism, survival and self-help. Yeah. उसी बात को घुमा घुमा के बोल रहे हैं, मतलब वही आप तीनों बात हम लोग एक्चुअली सेल्फ हेल्प फिर से हम लोग बात कर ही चुके हैं तीनों पे, बट यहाँ पर थोड़ा सा बात करना बहुत जरूरी है. देखिए, स्टैटिज्म refers to state and its sovereignty. State and its sovereignty. Yeah. Full stop. Full stop. Yes, sir. Within its territorial boundary, Yeah. states are sovereign and have authority to use violence, maintain law and order. नहीं, एक सेकेंड सर. Statism refers to state and its sovereignty, full stop. Then within its territorial boundaries, states are sovereign. States are sovereign. Yeah. States are sovereign and has authority to use Yes, sir. violence in law and order. Yes, sir. And आवाज खराब होने लगी. क्या कह रहे हैं सर?
नहीं, मैंने यहाँ तक लिखा है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, to establish peace and security. Law and order and to establish peace and security. Stop. Yeah. Distort हो रही है ना, अब आवाज समझ नहीं आ रहा। But अच्छा, but yes sir, outside the boundaries of nation state, outside the boundaries of nation state, yeah, comma, there is a lack of central authority. There is a lack of authority. yeah, and consequently, anarchy. yes sir, And consequently anarchy. Full stop. To establish peace and security in this international structure. क्या sir? How to establish peace and security, or how is it possible to establish peace and security In international system. in this anarchical international system? Yeah. मेजर तो यहाँ बात एनार्की की है, एनार्की जो है ना, प्रॉब्लम तो एनार्की है ना। Yes. हाँ, how is it possible to establish peace and security in this anarchical international system, right? Yeah. The answer is to maximize power, comma, balance of power, comma, secret diplomacy, and war. Yes sir. Right? बस तो इतना समझ में आया कि this is anarchical international system and how to maintain peace and security. Only BOP, right? BOP, power maximization, secret diplomacy, these are all tools to maintain peace and security, right? Yeah. Are you able to connect the idea? Yes sir. yes sir. No पीछे भी तो मतलब no conflict. हाँ, आपको बस घुमा कह दिया। वो पहले ये कह रहे थे कि पीस के लिए आपको पावर चाहिए, अब ये कह दिया कि पीस एस्टैब्लिश करना है तो कैसे होगा, तो ऑब्वियसली पावर चाहिए, बीओपी चाहिए। राइट, हाँ, घर के अंदर तो कोई बात नहीं, घर के अंदर तो पापा हैं, बैठे रहते हैं सबको थप्पड़ लगाने के लिए, राइट? लेकिन जब भी घर से बाहर निकलते हैं, राइट, तो अब ऐसे बड़े पापा नहीं, दादाजी सबके, हाँ, कि सबको मतलब संभाल ले। तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई सरकार नहीं है यहाँ पर, हाँ, कोई गवर्नमेंट नहीं, तो सिस्टम बड़ा ही अनार्किकल है और आपको पता नहीं कि हाँ, तो ये जो जिस अनार्किकल सिस्टम है, तो यहाँ पर कैसे आप पीस रखेंगे? तो पीस रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बंदूक लेके घूमिए। हाँ, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा,
है ना। अगर दो छोटा मोटा झगड़ रहा है तो एक थप्पड़ भी लगा दे आप वहां पर, तो वहां पर भी पीस हो जाएगा। राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सर्वाइवल। सर्वाइवल, सर्वाइवल। In anarchy, comma, yes sir, the important goal for nation state is survival. Right? Yes. How nation state can survive? Again question. How nation state can survive? How can nation state survive? How again can a sir, nation? we need power. Yeah, again we need power to secure the nation state. अब एक स्टेटमेंट है हेनरी किसिंजर का. Henry Kissinger argued that a nation's survival is the first and ultimate responsibility. A nation's survival is its first and ultimate responsibility. It cannot be compromised or put at risk. It cannot be compromised or put at risk. This is pragmatic ethics for political leaders. This is pragmatic ethics for political leaders to seek power, right, for security and survival. Right? Done? Done. Okay. Third is self-help. Self-help. Yeah. Okay. It is the most trusted mechanism in international system. Yeah. There are two kinds of self-help. There are two ways of self-help. पहला लिखिए. Yes sir. Maximize national power. Maximize national power. Second, alliance. Done? Done. Yeah. Okay, well, very good. Now we are going to criticize this power hunger theorist, right? खाना पीना सब के लिए power है. Yeah, we are going to criticize that. So I think sir, यहाँ से कल करें क्योंकि it's 20 तो हम 10 मिनट फोर्थ वर्ल्ड समझ लेते हैं. Okay. चलिए. है ना, ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है तो यहीं से कल स्टार्ट कर लेंगे. Okay, no problem.
नो प्रॉब्लम। हाँ बड़ा तो है। अब क्रिटिसिज्म करके, जैसे एक जनरल क्रिटिसिज्म है, राइट, फिर एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसिज्म है इन थियरी के, राइट, और उसके बाद न्यू रियलिज्म शुरू करेंगे। हाँ आप बताइए फोर्थ वर्ल्ड में क्या समझ में आया? हाँ सर, एक सेकंड सर, मैं निकाल दूं। सो सर मुझे जनरल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कुछ जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो लोग जो हैं अपना अलग से ही, मतलब दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप। जैसे मुंबई में क्या था वो, कौन सी सिटी थी, धारावी, और ये घेटोज बना लेते हैं, इनर सिटी घेटोज। सो बेसिकली मतलब दे फील एक्सक्लूडेड ऐसा करके। तो देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में कहीं ना, मतलब हर जगह पे थोड़े थोड़े लोग इस तरीके से रहते हैं जिन्हें हम कंबाइनली फोर्थ वर्ल्ड कहते हैं। थोड़े थोड़े नहीं, देयर इज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन। हाँ मतलब सिग्निफिकेंट, थोड़ा आई मीन कि हर कंट्री में हमें मिल जाएंगे ऐसे लोग। हर ग्लोबल सिटी में, कंट्री मत बोलिए, ग्लोबल सिटी बोलिए आप यहाँ पर, ग्लोबल सिटी, हर ग्लोबल सिटी में, राइट। सो यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, राइट, एनी सिटी यू नेम you can find fourth world. London, you know, you can name in Berlin or New York, you can find the fourth world, right, where the, you know, there are you know, excluded, you know, and exploited people, you know, ghettoized at a particular point, you know, assembled at particular point, you know, तो in a वो space. वो सिटी उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उन्हें खुद फील होता है या वो खुद एक्सक्लूड हो जाते हैं? You know, this, it is systematic, it is a structure, right? It is systematic and it is a structural. How it is a structural? Because, you know, the globalization, the MNCs and TNCs, right, did not benefit everyone equally, right? Who, you know, who joins TNC, MNC? The professionals, right? Professionals, skilled, right? Right? And MNC and TNC favored them. 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैलरी है पर मंथ की, बता रहा हूं मैं, इंडिया में 15 लाख, right? But at the same point of time, this MNCs and TNCs need also, you know, so-called unskilled or semi-skilled work, right? Unskilled or semi-skilled work. यहां पर क्या होता है कि ये लोग जो इनको अनफेवरेबल करते हैं, इनको भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि टीएनसी में यू नो स्टाफ, यू नो सैनिटेशन स्टाफ नहीं है, राइट। हमेशा आप जाएंगे मॉल तो आप देखेंगे एक आदमी 2 आदमी पोछा मारता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, हर जगह पे गार्ड रहेगा, राइट। और ये हर कंट्री में है। तो ये जो ग्लोबल प्लेयर है, टीएनसीज, एमएनसीज, they favored, but at the same point of time, they, you know, disfavored, right? They are unfavorable to the significant population, right? So यहाँ पर इनका है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, right? 15 लाख, 10 लाख, 4 लाख, ऐसी सैलरी होती है। मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ। और जो सो कॉल्ड कहते हैं अनस्किल्ड, पता है, पोछा मारने के लिए भी स्किल चाहिए, हाँ, राइट। उस मैनेजर को पोछा धरा दीजिए तो वो नहीं मारेगा, कहीं से कहीं छूट जाएगा उससे भी, राइट। उसको भी एक्वायर करने के लिए उसको टाइम लगेगा, हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बट लगेगा उसको। जहां पर 15 लाख है वहां पर इनको कितना दिया जाता है? 15,000। सैनिटेशन ऑफिसर को 15,000 भी नहीं दिया जाता है। वो मॉल अनाज के सैनिटाइजर जो सैनिटाइज करते हैं, मैं बता रहा हूँ 10,000 से लेके 12,000, 13,000 तक उनका सैलरी है। इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, यस राइट। अब ये लोग कहाँ रहते हैं? अब ये लोग कहाँ रहते हैं? अब ये लोग रहते हैं इस झुग्गी में, उस झुग्गी में, इस अनऑथराइज कॉलोनी में, उस अनऑथराइज कॉलोनी में। क्या करेंगे ये लोग, राइट?
Are you getting my point? Yes sir. और इस एमएनसी के बगल में ही रहते हैं। अब देखिए कि जो जॉब प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए वो ना होना चाहिए। आप देखेंगे, आपने बसंत कुंज का स्क्वायर मॉल देखा है? वो सर, हाँ सर देखा है। उसके पीछे झुकी है, जस्ट इमीडिएट पीछे झुकी है, बहुत बड़ी। और बसंत उस मॉल में जितने भी आपको सैनिटेशन वर्कर हैं, लो स्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, वो वहीं से हैं। सो हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? यस और सर। उसका मैनेजर दूर रहता है। उसका मैनेजर हो सकता है कि आनंद विहार रहता हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हो सकता है रोहिणी में रहता हो, वो कहीं भी रहता हो, राइट? यस सर। बट जो लो स्किल्ड अनस्किल्ड ये जो लोग हैं, ये वहीं पे रहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, these day people are being exploited, right? Because their value of the labor is undermined by the TNC's MNC, and this cross systematic measures are everywhere in the entire world, right? Yes, And that creates a gap of income, right? And that gap of income also promote the gap of space. There is spatial differences, right? You got the idea a little bit? yes sir. ये मैं कुछ लाइन से रीड कर रही हूँ, एक बार बोलिए इनका बोलिए मतलब बोलिए, हाँ बोलिए। This concept was given by Latin American sociologist Immanuel Cassel. According to Yeah. Cassel, globalization has created unexpected linkages through patterns of migration and creates a global elite with a similar lifestyle in every big city of the world. Yeah. ये क्या मतलब हुआ इसका? Has created unexpected linkages का मतलब क्या हुआ? ये वही कि वो मॉल और वो पीछे स्लम वाला। Yeah. There are several linkages. अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। मॉल है, हाँ? Through patterns of migration. या मॉल है, मैं बता रहा हूँ। मॉल है यहाँ पर बसंत कुंज वाला, हाँ? और यहाँ पर पहाड़ी बोलते, बसंत कुंज पहाड़ी, जहाँ पर ये बहुत बड़ा क्या नाम है, स्लम्स है, हाँ? अब इस मॉल में 5 लोग काम कर रहे हैं और इस मॉल को चाहिए 15 लोग, राइट? अब ये 5 लोग को बोला कि तुम 15 लोग ले आओ। अब ये क्या करेगा? 5 लोग पहाड़ी पे ढूंढेगा, 5 लोग अगर नहीं होगा तो क्या, गांव के लोगों को फोन करेगा, अरे काम चाहिए तो भाग के आओ। अब ये 5 लोग को बुलाए, हाँ, इट हैपेंस। अब देखिए, एक आदमी गांव से आया, वो 15 लोग को आसपास अपने गांव के लोग को बुला लिया, बिठा लिया, राइट? और 15-20 लोग एक ही मॉल में काम करते हैं, राइट? So this globalization has created, linkages between, and a very pattern of migration, right? And the linkages between also the elite and the vulnerable, right? Are you getting my point? Yes, Right? yes sir. So, अगर इतना बड़ा MNCs, TNCs इतना नहीं होता तो दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती। Delhi is the largest populous city in India. It's not Mumbai. Mumbai तो चला गया बहुत पहले, 2013 में ही चला गया। 2013 में ही Delhi has passed, surpassed Mumbai in terms of population, right? Migration की वजह से। And into 2050, Delhi is going to be the world largest populous city in the world, right? Right. Which city is the largest populous today? Delhi is the second one. Tokyo. Have you heard of Tokyo? Yes. Japan. The largest populous city. So whether you take Tokyo, whether you take New York, whether Mumbai, Delhi, this new pattern of globalization created a new world, right? And that new world you can find every city, every global city, whether it is Tokyo, whether it is New York, whether it is Mumbai or Delhi, or whether it is Brasilia. ब्राजील की राजधानी है ना, क्या है ब्राजील की राजधानी?
रियो दे जेनेरियो, राइट। अब कहीं भी सिटी ले लीजिए, राइट, या आप कैपस्टोन ले लीजिए, अफ्रीका की कंट्री, साउथ अफ्रीका की कंट्री, राइट, या ढाका, राइट। This globalization, has given rise to a new world that you can find in every global city, right? ठीक है, now I got it. इसी से मुझे पूरा नहीं समझ आ रहा, but now I got it कि कैसे linkages unexpected कौन से हैं, माइग्रेशन की वजह से है, और जिसकी वजह से ग्लोबल एलीट क्रिएट हो गया है with a similar lifestyle and everything. Yes. There are elites in every global city, right? Who enjoy the same prosperity, right? एक लोग के पास 5 गाड़ियां हैं, right? And this is not the story of New York and Tokyo. This is the story of Delhi. एक लोगों के पास 25 गाड़ियां हैं, right? राइट, एंड बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कभी वो BMW में चलते हैं, कभी फरारी में चलते हैं, कभी मुझे तो गाड़ियों के इतना नाम भी नहीं पता है, I'm telling you the fact, राइट। यस सर। अपने लिए अलग एसी है, लैट्रिन में अलग एसी है, कुत्ते के लिए अलग एसी है, उसके नौकर के लिए अलग एसी है, राइट। हाँ, वो खाते हैं तो 25 तरह की सब्जियां उनके पास, जो मन हुआ खाया, उसके नौकर खाया, नहीं खाया तो वो अपने नौकर ने अपने रिलेटिव को दिया, नहीं दिया तो उसको डस्टबिन में डाल दिया, राइट। See the marriage of the elite, they spend 5,000 crore, 500 crore, sorry, 500 crore, 1,000 crore, right? आपने अभी देखा कि अभी लॉकडाउन में अभी marriage was banned, right? Congregation was banned, but in Tamil Nadu, एक कपल ने क्या किया, एक प्लेन ही बुक कर लिया, राइट। हाँ, उसमें शादी किया। मैं उसको रिच नहीं मानता, वो अपर मिडिल क्लास होगा, राइट, या लोअर रिच होगा। रिच होता तो ऐसे नहीं करता है। रिच क्या करता है पता है? रिच सीधा यूरोप चला जाता है, वहां पे शादी करता है, सब लोग को वहीं ले जाता है, हाँ, समझे, और सबको अलग अलग गाड़ियों से ले जाता है, अलग अलग प्लेन से ले जाता है, और फिर वहां शादियां करता है, राइट। तो वो गरीब रिच है, दे आर द पुअर रिच, जो एरोप्लेन में शादी कर लिया, राइट। बट आई लाइक दिस, the way, the strategy, right, कि how to not, आपने पढ़ा है ना ये इसमें पॉलिटी में, कि अगर मान लीजिए कि लॉ नहीं है और वो वायलेशन भी नहीं है ना, क्योंकि तो जिक्र ही नहीं हुआ ना उसका, तो फिर क्या कह सकते। अच्छा सर, ये जो इमैनुअल कैसल है, ये तो पेसिमिस्टिक ग्लोबलिस्ट है ना? हाँ, पेसिमिस्टिक, ये मार्क्सिस्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ वर्ल्ड है, ये कह सकते हैं कि ये पेसिमिस्ट ने दिया है। हाँ, एग्जैक्टली। इमैनुअल कास्टल इज बिग सोशियोलॉजी, इसे बहुत बड़ा नाम है, अब अगर नाम लिखना काफी है। इमैनुअल कास्टल, he was Latin American scholar, बहुत बड़ा नाम है, right? And his work on city, global social movement, बहुत बड़ा काम है इनका, तो नाम ही काफी है इनका, right? Anything you need to make clarification? No sir, that's it, done. So the criticism we will do tomorrow. Yeah. And I hope you enjoyed today's class, right? Power. Yes, power, sir. Right? Yes, sir. Power, yeah. See you tomorrow then. Bye, sir. Thank you. Bye. Most welcome.